हेलो, अच्छा ठीक है, हो गया शुरू। ओके, सो शुरू करते हैं हम। तो हमने किया था, हमें ओपन मैपिंग थ्योरम करना था, उसके लिए हमने एक लेमा किया, तो उसको हमने प्रूव किया था। सो लेट्स डू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ओके, सो हमें दिखाना है अगर G है ओपन सेट X में, open set in X, we have to show that then T of G would imply that T of G is an open set in Y। और हमें याद रखना क्या है, X and Y जो इसमें assumptions हैं, they are both Banach spaces, they are complete normal linear spaces। और ये जो T है, T is a surjective यानी onto surjective linear transformation। Of course, I should say bounded linear transformation या continuous linear transformation। ये हमारी assumptions हैं and we have to show this। So अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम दिमाग में से आराम से प्रूव हो जाएगा। So let G be an open set in X। Okay, so we have to show that T of G is open। So let Y belongs to T of G। तो अगर मुझे दिखाना है T of G is open, तो मुझे दिखाना है there is an open ball centered at Y, open sphere, open ball centered at Y which is contained within T of G। ठीक है ना? तो it suffices। सर कोई वेटिंग में है, इसको एलो करो सर। यहाँ तो दिखा नहीं मुझे, यहाँ तो आया ही नहीं, यहाँ तो दिखाई नहीं रहा है कोई वेटिंग में है शायद कोई। हाँ, 11। Okay, it suffices to produce an open sphere on Y contained in T of G। बस इतना ही करना है and we are done। साबित हो जाएगा T of G open है and we are done। Now since Y belongs to T of G implies that there exists X belongs to G which is contained in X such that T of X is equal to Y। वही मतलब है T of G में belong करने का, right? Image of T and G is open है ना, and hence SRX is contained in G for some R positive। It must contain open sets, open balls centered at each of its points because G is open। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है all X belonging to X such that norm X is strictly less than R। मतलब ये सेट इसमें contained होगा। Okay, so we may write, अब हम ऐसे करेंगे, we may write SRX को हम लिख सकते हैं as X plus SR। That's rather, मतलब X plus SR का मतलब है X plus SR means a set of all this type X plus Y such that Y belongs to SR। That is, it means it is equal to all X plus Y such that norm of Y is strictly less than R। ये है SR। So उसका मतलब क्या हुआ? So suppose, अब देखो what is SRX? तो SRX भी लिखते हैं। SRX है all ऐसे Z such that norm of Z minus X is less than R। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों सेट बराबर है, ठीक है ना? बिकॉज सपोज Z बिलोंग्स हियर, Z अगर यहाँ बिलोंग करता है ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, अगर मैं लूं नॉर्म ऑफ Z माइनस X, वो बन जाएगा नॉर्म ऑफ X प्लस Y, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं,
अगर मैंने यहाँ सो माइनस वाई, राइट, सो वो बन जाएगा, मैंने क्या लिखा, z माइनस एक्स नहीं, इट शुड बी माइनस एक्स, है ना। सो विच मीन्स दैट नॉर्म ऑफ y, है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, विच इज बाय डेफिनेशन नॉर्म ऑफ y इज लेस देन r, सो दिस इज लेस देन r, यानी दिस इज लेस देन r। और यहाँ पे भी तो वैसे ही एलिमेंट्स है ना, यानी अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट लूंगा तो उसकी भी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर तो है ही, so it means that they are the same sets, so I can write srx at x plus sr. So by the lemma, T of SR contains some, let me call it S dash R1. Well, it contains some open ball centered at origin. So it implies that Y plus SR1 prime is an open sphere centered at origin, centered at Y. Now that's obvious. मैंने कहा obvious मैंने लिखा. It's an open sphere because जो add vector addition जो है वो एक isometry है. Therefore it's an homeomorphism. Therefore it would set open balls to open balls or interior points to interior points. अब जब मैं y plus ले रहा हूँ, it would send 0 to y and 0 is an interior point here. So it would be mapped to an open set because it's a homeomorphism. मेरे कहने का मतलब है this is an open set if this is an open set. और ओपन सेट क्योंकि उसका जीरो इंटीरियर पॉइंट था इसलिए इसका y इंटीरियर पॉइंट होगा अंडर द इमेज ऑफ t of x is equal to y plus x. सो अगर ऐसा है, so it implies that y plus s dash r1 we know is then contained in y plus t of sr, because this set is contained here, right? T sr contained is the same, which is nothing but equal to y is equal to t of x plus t of sr, which is nothing but t of x plus sr, or which is equal to t of srx, right? Which is contained in t of g. Why? Because srx is contained in g. Therefore, t of srx is contained in t of g. So I have found an open ball centered at, मैं यहाँ थोड़ा as per my notation यहाँ होना चाहिए s dash r sub 1. Okay, so this is an open ball centered at y contained in tg, where y was an arbitrary element of tg, so which implies that t of g is open and प्रूव हो गया ये. तो हमारा ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूव हो गया. बेसिकली जो पहला लेमा था वही इसका प्रूफ था, इसमें तो थोड़ा बहुत हमें फिर करना था. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट वी कॉल द प्रोजेक्शन थ्योरम. तो प्रोजेक्शन थ्योरम के दो हिस्से हैं. वैसे जो यूजुअली होता है हमारे लीनियर स्पेसेस में ये होता है. You take any subspace, suppose x is a finite dimensional की मैं बात कर रहा हूँ, of course. जो लीनियर स्पेस है उसका कोई भी सबस्पेस ले लो, से m, right? So then you can, if there exists a projection, suppose there exists a projection from x to m, then I can write x as m plus n, where n is the kernel of P, right? Kernel of this projection. And converse is also true. It's for linear spaces. लेकिन normal linear spaces के लिए ये जरूरी है that ये जो m हो ये closed हो और ये जो है ये Banach space हो. यानी it is true for closed subspaces of Banach spaces. मतलब if and only if अगर ना मैं लूँ मतलब both ways. So for that let's do the first part of this theorem. वो ये है that, let me write down. Be easy है वैसे. If
P is a projection on a Banach space of X, and M and N are its range and null space, then M and N are closed subspaces of X, and X can be then written as a direct sum of M and N. Proof भी इसका कुछ मतलब बिल्कुल easy है. Now we are given that M जो है, it is actually range of P, यानी it is all P of Z such that Z belongs to X. यानी मेरा जो मैप है, it goes from X to M, जो मैंने यहाँ लिखा था. लेकिन जो नीली लीनियर स्पेसेस में उसमें ये कंडीशन नहीं है क्लोजर क्लोजर की, ऑब्वियसली वहां तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एंड व्हाट इज कर्नेल? नल स्पेस होता है, इट्स अ सब स्पेस ऑफ X, है ना, तो इट्स इनसाइड X, so it means all X belonging to X such that, चलो मैं यहाँ Z लिखता हूँ क्योंकि वहां मैंने Z लिखा. Okay, all Z belong to X such that P of Z is equal to 0. Okay, now both are subspaces, we know that, है ना. Range of a, since चलो मैं लिखता हूँ, since P is linear, both M and N are subspaces. Range of a linear map is subspace. Kernel of a linear map is also a subspace. So both are subspaces of X. Okay. Now we show that closed हम करेंगे. हाँ, हमें दिखाना है ना, M and N are closed, वो भी है, subspaces तो है ही. Furthermore, okay. अब चूंकि ये subspaces हैं, how do I show that? हाँ, कर सकते हैं. I have got this thing. Subspaces के लिए दिखाना. हाँ, since P is continuous, and of course N is equal to basically P inverse of the identity, and is a closed subspace, subset, which implies that N is closed because inverse image of a closed set is closed. और चूंकि ये closed है, it is the inverse of the kernel. Also, if I think of the map I minus P, so identity minus P. Now this is continuous, and what would be IP inverse of the origin? It would be all Z belonging to X such that I minus P of Z is equal to 0. So it is the inverse image, which is the same thing as all Z belonging to X such that I of X is equal to P of X, Z, sorry. Okay, that is all Z belonging to X such that P of Z is equal to Z. So that is nothing but M. So I minus P be continuous because we know that if I take all bounded linear operators on a space, right, they form a vector space. अगर I चूंकि वहाँ रहता है, P जहाँ रहता है, वो I minus P भी रहता है, और it is inverse image of this singleton set, which is of course closed inside M. 0 यहाँ पे है,
So therefore what? Therefore M is closed. So therefore M is closed. Okay. Now 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 to show that x is equal to M direct sum n, it suffices to show that M and N are disjoint. M and N span X and are disjoint. By disjoint I mean they only have origin तो होगी because they are both subspaces. Common अगर है तो सिर्फ मतलब origin है, दोनों ही subspaces. Now Z can always be written as P of Z plus I minus P of Z. As you can see, क्योंकि ये बन जाएगा P of Z plus I of Z minus P of Z, and they cancel where I is the identity. I अगर identity है तो ये Z है. So where I is the identity map. I is the identity of X. अब P of Z कहाँ belong करता है? Let's see, P of Z belongs to, of course P of Z belongs to M by our, मतलब P of Z तो है ही M में, तो ये M में है. और where does I minus P of Z belong? P of Z belongs to I and I minus P of Z belongs to, चलो मैं लिख देता हूँ, P of Z is obviously in M, and you have to remember projection is from X to M. And P of I minus P of Z किसके बराबर होगा? It would be P composition I minus P composition P of Z. That is P composition identity तो identity होगा, P composition P ही होगा, है ना? Why? Because जल्दी बताओ ना मुझे. Because प्रॉपर्टी होती है प्रोजेक्शन की P square is equal to P. मेरे कहने का मतलब है P composition P is again P. तो अगर ऐसा है तो this is nothing but P of Z minus P of Z. It's equal to 0. तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो यहाँ है I minus P of Z, it belongs to the kernel of P, यानी it belongs to the N. यानी I minus P of Z belongs to N. तो हमें ये तो हो गया कि ये M में है, ये N में है, तो यानी you can write Z like this. There is no issue where this belongs to M and this belongs to N. लेकिन इसका मतलब Z, इसका मतलब सिर्फ ये है कि M can be written as M plus N. लेकिन can this representation be unique? जब ये यूनिक होती है इस तरह की रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम सर्कल लगा देते हैं, तो हम इसको कहते हैं डायरेक्शन. उसके लिए ये जरूरी है, वो तभी होता है जब M और N डिसजॉइंट हो. अब डिसजॉइंट के लिए, so therefore M and N span X. Now to see that M intersection N is just the identity, the origin. So if P of Z, suppose P of Z belongs to both M and N, उसका मतलब है कि P of Z belong, मतलब of course, चलो मैं यहाँ इसको जरा थोड़ा सा इजी कर देता हूँ. इसका मतलब ये होता है P of Z belongs to M and P of Z also belongs to N. यही है ना, इंटरसेक्शन का ही मतलब होता है. Now P of Z जो होगा, it would be, because it belongs to the kernel, it should be 0. Shouldn't be, because anything that is inside N would be sent to 0 because N is the kernel of P. है ना? So which implies that, अब देखो, P of Z belongs to M
P of Z is 0. So that means, लेकिन P of Z किसके बराबर है? मैंने अभी कहा P square is equal to P. It implies that P of Z is also equal to 0. So अगर P of Z 0 है, right? So अगर कोई भी एलिमेंट M intersection N में है तो वो 0 है, right? So that means, of course, hence M intersection N can be equal to, is only equal to the identity, which implies that X can be written as direct sum of M plus N. Okay, theorem. इसका कन्वर्स एक तरह से, लेकिन यहाँ पे कन्वर्स में हमें जरूरी मेंशन करना है कि M and N have to be closed subspaces. यानी let X be a Banach space and let M and N be closed subspaces of X such that X can be written as the direct sum of M plus N. Now if Z is equal, then Z is equal to X plus Y is the unique representation जो कि होनी चाहिए, unique representation of a vector Z belonging to X as the sum of vectors X belonging to M and Y belonging to N, then there exists a projection. Then there पहले तो projection से हमें breakage मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो that would also give us a projection. Then there exists a mapping P from X to M. सीधे मैं लिखता हूँ P on X such that P of Z is equal to X, which is a projection on X with range and null spaces, yeah, with M and N as its range and null space respectively. थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन ये एक तरह से उसका कन्वर्स है. यानी अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्शन है इस तरह की, तो there would exist a sort of a breakup of X into two spaces. And converse is also true. If you can write X as M plus N, then there does exist a projection which would break it up. So let's do the proof. Again, it's easy. Now clearly, अगर मैं देखूं P as a map, of course it's now a map from X to M. Now clearly P is linear. Can you see that P is linear? Clearly P is linear. Because now look at this. Suppose Z1 belongs to X, Z2 belongs to X, right? Then X can be written as M plus N. M direct sum N, which implies that Z1 can then be written as X1 plus Y1 and Z2 can be written as X2 plus Y2. That also means then P of Z1 is equal to, ये जो इसका M का component है X1 by our definition, and P of Z2 is equal to X2. And Z1 plus Z2 can be written as X1 plus X2 plus Y1 plus Y2. So that means P of Z1 plus Z2 होगा इसका ये वाला portion जो X में है. So it would be X1 plus X2. That's nothing but P of Z1 plus P of Z2. Same applies if we multiply by a scalar. That's easy. So clearly P is linear क्योंकि it was an easy to prove. And P square of Z is equal to P composition P of Z is equal to P of Z. That's P of Z. P of Z क्या है? Okay, चलो एक और लिखते हैं.
That's p of x, which is equal to p of x plus 0. That's again p of, okay, I should write it as, this is p of, just a minute, मैंने क्या लिखा, p square of z is equal to p of, चलो just a minute, मैंने थोड़ा एक यहाँ थोड़ा गंदा कर दिया. Okay, so that's p of x. Now what is p of z? P of z is equal to, p of x is equal to x, of course, and p of z is also equal to x, which implies that, because p of x is x, because x can be thought of as x plus 0, इसका x का component जो है वो x है, y सिर्फ 0 contribute करता है, so which implies that p square is equal to p. It's idempotent. Now we have to show that it's continuous, linear, idempotent, continuous. Now to show that p is continuous, let x prime denote the linear space x uh, equipped with another norm, equipped with the norm, यानी वो जो norm prime है, it is defined as norm of z prime is equal to norm of x plus norm of y, where z is the uniquely written as x plus y. मेरे कहने का मतलब है x है, उस पे ऑलरेडी एक नॉर्म है ना. अब मैंने जो इसकी स्पेस है उसको सेम रखा और मैंने इस पे दूसरा नॉर्म डिफाइन किया वाया दिस इक्वेशन. पहले तो ये कि इज इट नॉर्म, है ना, वो मैं तुम पे छोड़ता हूं. इंडीड डिफाइंस अ नॉर्म, यानी नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. A norm on x, and since x is complete, so is x prime. अब चूंकि अगर एक कंप्लीट स्पेस है, चूंकि x है ना Banach space by definition, by our assumption, Banach space with respect to this norm, so it must be also a Banach space with respect to this norm. Again, that's easy to check. So because if you take a Cauchy sequence say Zn, then that can be written as xn plus yn, और इसका जो होगा zn minus zm, वो होगा of course यहाँ प्राइम है xn minus xm plus yn minus ym. तो of course अगर ये Cauchy sequence है under this norm, so अब अगर मतलब easy है कि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा as nm approaches infinity. So if a Cauchy sequence converges, every Cauchy sequence converges under this norm, it must also converge. मतलब straight मतलब ये use करके तुम prove कर सकते हो, बहुत ही easy है. Okay. Also, norm of p of z is equal to norm of x, but this would be less than equal to norm of x plus, क्योंकि मैं एक positive quantity add कर रहा हूँ, but that is the definition of this prime norm. इसका sorry z, which implies that p is a continuous map. P is a continuous map of x prime to x. अगर मैं p सोचूं as a map from same space but different norms. So ये तो हो गया, ये continuous है. Now if so p is a continuous map. Now let I be the identity map of from x prime to x. लेकिन norms different है, sets same. So then I have got ये इधर होगा, so I take I of z
is equal to norm of z, which is equal to, of course, norm of x plus y, which by definition is less than equal to norm of x plus norm of y, but that is equal to norm of z prime. So which implies that I is continuous. तो अगर I continuous है and I is a bijection, वो तो है ही, and linear. What does that mean? It means that I चलो मैं ऐसे कैसे लिखूं? Let me see. So I is a continuous bijection between Banach spaces. Implies that I is a homeomorphism. और अगर आइडेंटिटी होम्योमॉर्फिज्म हो then x and x prime have the same topology. Because identity is a homeomorphism between these two, which implies that P is a continuous map from x on to n. देखो यहां से तो सिर्फ ये साबित होगा, है ना, यहां से तो सिर्फ होगा P is a continuous map from, ओके मैंने गलत कर दिया, ओके, फ्रॉम x प्राइम टू n. लेकिन यहाँ हमने साबित कर दिया कि x प्राइम और x की टोपोलॉजी सेम है, क्योंकि इन दो के दरमियान जो आइडेंटिटी है दैट्स अ होम्योमॉर्फिज्म. तो अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है तो इस हिसाब से भी, क्योंकि इसकी और इसके जो ओपन सेट्स है वो सेम है, तो ये थोड़ा सा आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन. हाँ मैंने यहाँ पे ये कहा, मैंने यहाँ पे ये यूज किया, अगर तुम्हारे पास दो एक ही सेट है उस पे दो डिफरेंट टोपोलॉजीज है, तो अगर आइडेंटिटी जो है उनके दरमियान होम्योमॉर्फिज्म है, मतलब कंटिन्यूअस है फ्रॉम बोथ साइड्स, तो उसका मतलब होता है कि tau 1 is equal to tau 2. But that can be easily verified actually. क्योंकि हमें पता है, देखो क्या है, एक ही सेट है, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, एक ही सेट है, लेट मी टेक x, इसमें है आइडेंटिटी मैप है, सो ए बी सी ऐसे आइडेंटिटी मैप है, एवरीथिंग गोस एवरीथिंग, ठीक है. मतलब ये तो मैंने बड़ा ट्रिवियली दिखा दिया. अब मान लो इसमें कोई टोपोलॉजी है, इसमें एक टोपोलॉजी ये है, उसमें ए है ना, और उसमें बी है, तो बाय दैट मीन्स अगर यहाँ पे टोपोलॉजी है टाउ 1 और टाउ 2, अगर यहाँ पे कोई ओपन सेट है तो उसकी प्री इमेज यहाँ पे होगी, उसकी जो प्री इमेज होगी जो कि सेम है ना, क्योंकि यहाँ प्री इमेज सेम ही होगी ना, क्योंकि इट्स आइडेंटिटी. तो उसका मतलब अगर कोई, देखो अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये है कि टाउ 2 मस्ट बी कंटेन्ड इन टाउ 1, अगर आइडेंटिटी कंटिन्यूअस है from in this way. अगर उसका in this way भी continuous है, then I should have tau 1 contained in tau 2. Means that if identity is a homeomorphism continuous both ways, then the topologies must be same, you know, on the set with different topologies. So अभी क्या था, हमारे पास दो different norms थे, right? तो हमने दिखा दिया आइडेंटिटी यूजिंग द ओपन मैपिंग थ्योरम, उनके दरमियान जो आइडेंटिटी है, मतलब बिकॉज दिस गिव्स राइज टू सम टोपोलॉजी, दिस इज अ मैट्रिक, दिस गिव्स राइज टू सम अदर टोपोलॉजी. तो अगर मैं दिखा दूं आइडेंटिटी कंटिन्यूअस है, तो जो यहाँ से ओपन सेट्स मिलेंगे वही यहाँ से भी ओपन सेट्स मिलेंगे. अगर ना मैं दिखा दूं आइडेंटिटी इज होम्योमॉर्फिज्म, जो कि हमने किया वाया द ओपन मैपिंग थ्योरम. मैंने दिखा नहीं, लेकिन मैंने कहा ना आई इज देयरफॉर, चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बाय ओपन मैपिंग थ्योरम. चलो